Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and today we'll be doing the numerical problems of our chapter number 4 of statistics. Today we'll be doing the numerical problems regarding the chapter number 4, which is all about organization of data. In my previous videos, I have shared the theoretical concept regarding this chapter and we have learnt about the different type of distribution series. And today we'll be doing the numericals and we'll learn how to convert one series into the other. Before I start today's video, I assume that you have gone through all the previous theoretical videos from this chapter and you have a clear idea regarding the series. And if you are not able to connect to the name of the series and you are not able to relate कि ये series है क्या, I would suggest to go back to those videos and first grab the concept, understand, and then come on to the numerical video. Okay. So now let's proceed with the various numericals. We'll be doing different type of illustration here so that in your examination, if you get any kind of numerical from this chapter, you guys are able to solve it fully correct. So the very first question of the day is, we have this question and we'll be seeing the solution as well and I'll be telling you how to solve it. Okay. So the first question says, in a survey, it was found that 17 families bought milk. 17 फैमिली ने मिल्क बॉट किया, खरीदा इन क्वांटिटीज इन अ पर्टिकुलर मंथ और क्वांटिटी दी हुई है नीचे डेटा के अंदर, ओके, इन लीटर्स. देन यू नीड टू क्लासिफाई द फॉलोइंग डेटा इन एन इंडिविजुअल सीरीज, द डिस्क्रीट सीरीज, द कंटिन्यूअस एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. ओके, सो आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया है कि हमें डेटा दिया गया है 17 फैमिलीज का जिन्होंने एक महीने में कितना लीटर ऑफ मिल्क खरीदा है. तो हमारे पास रैंडमली रॉ डेटा प्लेस्ड है. सो वी नीड टू क्लासिफाई द डेटा एज द चैप्टर नेम सजेस्ट. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करना है अभी हमें, ओके, इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. विल लेट्स सी द डेटा फर्स्ट एंड देन विल गो ऑन टू द सॉल्यूशन. सो एज पर द क्वेश्चन, दिस इज द रॉ डेटा गिवन टू यू गाइज. सो यू नो द ड्रिल, ओके. सो देयर इज nothing to explain here, just your raw data. Now let's jump onto the solution and let's organize this raw data into different frequencies. So first we have the individual series. Individual series में हम क्या करते हैं? Either we arrange the data in an ascending order or in a descending order, right? So choice is yours. आपको कैसे करना है, कौन सा मेथड फॉलो करना है. Here I have taken the ascending order. So similarly मैं सारी सीरीज में अपना ascending order ही फॉलो करूँगी. राइट, सो चूज अकॉर्डिंगली. सो असेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है? फ्रॉम स्मॉलर वैल्यू टू दी बिगर वैल्यू. विल मूव फ्रॉम स्मॉलर वैल्यू टू दी बिगर वैल्यू. ओके, सिमिलरली विल प्लेस आवर नंबर्स हियर. सो सबसे छोटी वैल्यू उधर सीरीज में है 10. जितनी बार 10 आया है विल प्लेस इट. ओके, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? नंबर ऑफ आइटम रिपीटिंग इटसेल्फ इन अ सीरीज. ओके, 10 4 बार आया है डेटा में तो विल प्लेस 10 4 टाइम्स, sorry 5 times. Okay, then we have 11 for the 3 times, 16 for 2 times, 19 for 1 time, 20 for 3 times, 23 for 2 times and 25 for 1 time. जितनी बार आए हैं उतनी बार आप लिखते जाओगे. 10 जो कि 5 बार रिपीट कर रहा है अपने आप को इस सीरीज के अंदर. So we'll be writing in an individual series 5 times the 10 number, 1 2 3 4 5. Okay, जितनी बार आइटम अपने आप को रिपीट कर रहा है आपको उतनी बार आइटम लिखना पड़ेगा. इट इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज. नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. देन वी हैव द डिस्क्रीट सीरीज. अब उस डेटा को हमें डिस्क्रीट सीरीज में भी डालना है. सो इन डिस्क्रीट सीरीज वी ऑलवेज मेक वन एडिशनल कॉलम फॉर द टैली बार्स. टैली बार्स हमने किया था ना कि 1 के लिए एक टैली बार, 2 के लिए 2 टैली बार, 3 के लिए 3 टैली बार बनेंगे एंड सिमिलरली 4 के लिए एक टैली बार और एंड 5 के लिए इसको क्रॉस कर देते तो ये 5 को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सिमिलरली ऊपर से आपने काउंट कर लिया, डेटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में. नाउ यू नो क्वांटिटी 10 कितने लोगों ने खरीदी थी? 5 ने. सो यू विल रिप्रेजेंट द टैली बार हियर and write down the frequency in the next column. So in discrete series you will be making basically 3 columns here: quantity, tally bar and the frequency. Okay, quantity के सामने जितना frequency है उसको tally bar में represent करोगे. Similarly you will represent rest of the quantities in tally bar and the frequency in the last column. Okay.
Further we need to convert the raw data into a frequency distribution. जब हम frequency distribution की बात करते हैं, so we need to take the class intervals here along with the telebars and the frequency. So in order to divide the entire data, let's take a very easy class interval so that you need not to make a very large table here. Okay, so I have chosen from 0 to 10 category. So 0 to 10, 10 तक कितने लोग 10 लीटर तक दूध खरीद रहे हैं? The number was 5. Okay, similarly I'll make the telebars. Then coming on to 10 to 20 class interval, 10 से 20 के बीच में कितने लोग खरीद रहे हैं? Okay, so we need to see the data. So 10 to 20 के बीच में हमें देखना है किसने कितनी क्वांटिटी खरीदी. We'll see the entire table. 11 लीटर खरीदने वाले 3 जन थे, 16 लीटर खरीदने वाले 2 जन, 19 लीटर खरीदने वाले 1 जन और 20 लीटर खरीदने वाले 3 जन थे. Okay, so we need to add up क्योंकि ये सारी quantities lies between the class interval of 10 to 20. Similarly, when we added up all the quantity, we got 9. So we'll place the telebar accordingly here, 9 and frequency 9. Similarly, we'll see the next class interval 20 to 30. 20 to 30 के बीच में 2 जन जो है वो 23 लीटर्स खरीदते हैं and 1 is buying 25 liter. Again we'll add up. By adding up, we'll get number 3. Similarly, we'll place according to the telebars and the frequency in the above table. So this is how we can present the simple raw data into a frequency distribution series. And the last part of the question was demanding the cumulative series. So in the cumulative series, we place the data according to the less than or a more than category. I have explained very well the concept. If you are not able to remember, try and go and watch the previous videos first. Okay. Lastly, the question demands the cumulative series. In the cumulative series, we have again two options. We can present the data in the less than form or the more than form. Okay, this I have explained very well in my previous videos. You can go and check out the concept. Here I am just providing you the solution how to attempt the numericals. So talking about the less than series, how you can place less than matlab aap less than 10. You will categorize the quantity as less than 10, less than 20, less than 30. Okay, and talking about the number of buyers, when it is less than, तो लेस देन के अंदर nobody is buying less than 10. 10 लीटर से कम तो कोई भी बाय नहीं कर रहा है, therefore 0. लेस देन 20, 20 लीटर से कितने लोग बाय कर रहे हैं? 20 लीटर से कम, 10 वाले भी और 20 से नीचे वाले. Okay, will be included in this class interval. Therefore, adding the first two frequencies of the number of buyers buying 10 liters plus above liter. Okay, but less than 20. So we'll add up the frequencies. 5 plus 9. We'll get 14 number of buyers. Similarly, it says less than 30. Less than 30 तो सभी buy कर रहे हैं. Okay, so we'll add up the frequency 5 plus 9 plus 3, which will be equal to the sum of the total number of buyers. It's equal to 17. You can always check your answers. Then we have the another case here in cumulative series. If somebody want to represent the data in more than series. Okay, more than में उल्टा चलते हैं हम. We will be deducting the frequencies from the total. Okay, less than में we were adding up the frequency. More than में हम उसको minus करते चलेंगे, right? So more than 10. More than 10 तो सभी लोग खरीद रहे हैं. 17 के 17 जन जो हैं, they are buying the quantity either 10 liters or more than 10 liters. So 17. Okay, more than 20. So we'll minus out the number of people who are buying 10 liters of milk. Okay, so 17 minus the very first frequency 5 will get 12. And more than 30 will again minus the next frequency, next alternative frequency from this remaining number and will get the number 12 minus 9 is equals to 3. आपको समझ में आया होगा कि more than में हम टोटल में से फ्रीक्वेंसी को माइनस करते चलते हैं. पहले टेबल के अंदर हमने देखा फ्रीक्वेंसी जो हमने बनाई थी इट वाज 5, 9 एंड 3. ओके, तो सिमिलरली आप उन फ्रीक्वेंसी को माइनस करते चलोगे टोटल से. 17 में से 5 माइनस करोगे, फिर जो सम बचेगा उससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करोगे. ओके, तो अब अगर आपको क्लियर हो गया हो, लेट मी गिव यू अगेन अ क्विक रिविजन. इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने पहले इंडिविजुअल सीरीज की. इंडिविजुअल सीरीज में हम
कैसे भी इट्स योर चॉइस, यू वांट टू अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. जस्ट कंक्लूड ऑल ऑफ दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. हमने सबसे पहले बात की इंडिविजुअल सीरीज की, राइट. इंडिविजुअल सीरीज में हम सिंपली नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को प्लेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट. चॉइस इज योर. अगर आप असेंडिंग ऑर्डर चूज करते हो लाइक दैट आई हैव चूजन हियर इन द सॉल्यूशन, you have to go from the smaller value to the bigger value, छोटे से बड़े की साइड. डिसेंडिंग इज ऑपोजिट ऑफ दैट, यू हैव टू मूव फ्रॉम द बिगर वैल्यू टुवर्ड्स द स्मॉलर वैल्यू, बड़े से छोटी वैल्यू की साइड. ओके, सो सिमिलरली आपको बस उसको प्लेस करना है एज सिंपल एज दैट. देन वी हैव डन द सेकंड टाइप ऑफ सीरीज विच वॉज द डिस्क्रीट सीरीज, जिसके अंदर हमने टेलीबार्स किया था. देन वी हैव डन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर क्लास इंटरवल प्लस द टेलीबार एंड द फ्रीक्वेंसी आते हैं. ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको. सो इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज को हम टोटल को क्लास इंटरवल के हिसाब से फ्रीक्वेंसीज को एड अप करके देखते हैं, राइट. एंड लास्टली वी हैव डन द क्यूमुलेटिव सीरीज. इसके अंदर भी दो पार्ट थे, लेस देन और मोर देन. अगर लेस देन में आप जाते हो, फॉलो करते हो इस मेथड को, तो यू नीड टू एड अप द फ्रीक्वेंसीज. ओके, एंड इफ यू आर फॉलोइंग द मोर देन वाला टाइप, you need to subtract the frequency from the total. Okay, और अगर आपको आंसर चेक करना है whether it is right or no wrong, so you can see the last digit that you get in the table. less than में तो आपकी total के इक्वल आएगा and more than में आपकी last frequency के इक्वल रहेगा, right. So this was all about the very first question. I hope all the concept regarding the conversion of series is clear to you all. It was very simple. After understanding the first question, let's move on to another type of the question that you can encounter in your exam. Okay, suppose this is the question that you get. It is the monthly expenditure of 30 household spending on the food. 30 घरों का खर्चा है पर मंथ, कितना खर्चा करते हैं on the food, खाने पे. Okay, so this is the data and the question demands. So the very first part of the question demand, obtain the frequency distribution using the following class interval. So आपको class interval assign किए गए हैं कि आपको इस data को in class interval के accordingly आपको arrange करना है. And after that, the second part of the question demand, you need to find out the percentage of the people spending less than 250 a month and also people spending more than 200 per month. Okay, so let's see the solution part. So talking about the solution, पहले हम क्लास इंटरवल लेंगे, देन टेलीबार एंड देन द फ्रीक्वेंसी. दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेप. यू नीड टू सी 100 to 150 के बीच की जितनी भी अमाउंट है डेटा के अंदर दी हुई है, काउंट दैट नंबर्स. ओके, एंड इफ यू विल काउंट, यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 4. 100 to 150 के बीच में सिर्फ 4 ही वैल्यू दी गई है ऊपर वाली टेबल के अंदर. ओके, सो अकॉर्डिंगली यू विल प्लेस all of the values as per the class interval. 150 और 200 के बीच में 6 values आती हैं. So 5 plus 1 telebar. तो I hope you know how to represent the telebars by now. And similarly for other class intervals till the last class interval, which is 300 to 350. And this is the frequency you get after calculating. You can calculate and see along with this video, you will get the same. Okay, and in order to check whether your frequency that you have counted from the above table is right or wrong, you can always add up the frequency, and this addition of the frequency should be equal to the number of the household given in the question. So the question said 30 household. Okay, मतलब 30 घरों का डेटा है ये. So total frequency should be equal to 30. And what is the frequency? The number of time the item is repeating itself in a series, right? So आप सारी frequency को add up करोगे तो आपको 30 के equal आएगा. It means your answer is correct. Moving on to the second part, which demands the percentage. The percentage of the household spending less than 250 per month and more than 200 per month, right? So less than 250. 250 से less than वाली add up the frequency. 4 plus 6 plus 13. 250 तक इतने ही तो लोग हैं. So I will add up the frequency, right? तो मैंने add किया 250 से कम वाली frequency को, ठीक है. तो 250 की कितनी है? 4 plus 6 plus 13.
सबको ऐड करूंगी 250 तक, तो सब लोग स्पेंड कर ही रहे हैं ना ये वाली क्लास इंटरवल, तो ऐड करके मुझे क्या आया 23 टोटल मिला. एंड फाइंडिंग द परसेंटेज इज वेरी सिंपल. यू हैव बीन लर्निंग टू फाइंड आउट द परसेंटेज सिंस योर क्लास 6. ओके, सो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहता है, जितना आपका आया है डिवाइडेड बाय टोटल. टोटल कितना है 30 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. तो टोटल को जो हमारा कितना आया है लेस देन 250 अ मंथ, कितने लोग कर रहे हैं 23. So we'll find out the percentage 23 by 30 into 100 and we'll get 76.6%. Okay. Similarly, the next part demands the number of household spending more than 200. More than 200. More than 200 में कौन कौन आएंगे 200 से above. So last 3 class interval 13 plus 5 plus 2. 200 से ज़्यादा तो यही है ना नीचे वाले, तो इनको एड अप कर दो. 13 plus 5 plus 2 कितना आएगा 20. So similarly you will find out the percentage 20 by 30 into 100 you will get 66.6%. This was as simple as that. A quick revision here. हमें क्वेश्चन में 30 हाउस होल्ड का डेटा दिया हुआ है, तो हमें पहले क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंगली उसको रिप्रेजेंट करना था. एंड सेकेंड पार्ट में वी नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज. दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर in this question, and this question is completely done. Next question is convert the cumulative frequency into the simple frequency distribution. A very simple question, and I hope most of you can attempt doing it without seeing the video also. Okay, so more than marks are given here. ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इधर लेस देन में दिया होगा या मोर देन में. आपको क्वेश्चन में मोर देन मार्क्स दिए हुए हैं. ओके, मोर देन 0, more than 5, more than 10 and similarly more than 30 marks are given to you, and this is the number of students securing the marks. Okay, so this is a type of a cumulative, right, क्योंकि more than के terms में दिया है. You need to now convert this cumulative frequency series into a simple frequency series. Okay, simple मतलब क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे, more than हट जाएगा, right. Let's see the solution. So talking about the more than series, क्या बताया मैंने आपको कि टोटल से माइनस करते चलोगे आप, राइट. सो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हमें टोटल कितना पता चला है मोर देन 0. सबको ही आए हैं 0 तो ना. 55 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता चल रहा है, राइट. मोर देन में हम क्या करते चलते हैं, सब्सिक्वेंट जो फ्रीक्वेंसी है उनको डिडक्ट करते चलते हैं, माइनस करते चलते हैं, राइट. तो क्लास इंटरवल 0 to 5, तो 55 minus 51 4. 5 to 10 के बीच में क्या आएगा 51 minus 43. 10 to 15 में क्या आएगा 43 minus 28. Similarly you will go ahead and the last one was more than 30. More than 30 मतलब एक और ज़्यादा क्लास इंटरवल रहेगी which is 30 to 35. More than 30 तो तभी होगा ना, तो more than 30 तो 0 है, तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो लास्ट में it will be 0. I hope the solution is clear. There is nothing much to explain. Just a base here that अगर more than दिया हुआ है you need to deduct the frequencies. अगर less than दिया हुआ होता तो you were supposed to add up the frequencies, right? So as simple as that. This question says that convert the series. Which series? Inclusive series into the exclusive series. जब हम अपने चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट कर रहे थे I have told you the difference between both the series एंड कन्वर्ट करना भी सिखाया था. ओके, सो जो इंक्लूसिव सीरीज होती है हमने पढ़ा था एक पॉइंट कि इट इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डेसिमल नंबर ऑफ सीरीज. ओके, जब पॉइंटों में नंबर होते हैं तब इंक्लूसिव सीरीज इतनी सक्सेसफुल नहीं रहती. देयरफॉर वी नीड टू चेंज इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज दोनों कंप्लीट नंबर और डेसिमल नंबर को काउंट कर सकती है एंड एक्सक्लूसिव सीरीज इज अ कंटिन्यूअस सीरीज. यहाँ तो कंटिन्यूस नहीं है ना. 19, 24, नेक्स्ट यूनिट आ गया 25, 29. अगर ये कंटिन्यूस बनानी है लेट्स सी हाउ विल डू. आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला. हम जो फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो हमारी अपर लिमिट है एंड नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं विच इज कॉल्ड आई. ओके, आई को हाफ में डिवाइड करते हैं. इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1. तो यहाँ इसका डिफरेंस एंड इसका डिफरेंस निकालते हैं ना हम. सो आई विल बी इक्वल टू 1 एंड हम क्या करते हैं फिर उसके बाद हाफ ऑफ आई को हम लोअर लिमिट से माइनस करते हैं एंड अपर लिमिट में भी एड अप. आई होप यू रिमेंबर. सिमिलरली लेट्स सी द सॉल्यूशन नाउ. सो आई क्या आया था 1, हाफ ऑफ आई क्या रहेगा 0.5.
तो 0.5 को लोअर लिमिट में से हम माइनस करेंगे और अपर लिमिट में हम ऐड करेंगे. माइनस किया तो 19 became 18.5 and 24 became 24.5, right? So similarly you will go ahead with the following class interval. Frequencies will remain same. Why? क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज एक तो कंटिन्यूस होती है. 24.5 24.5, 29.5 29. कंटिन्यूस कनेक्शन है, कंटिन्यूस सीरीज है, एंड ऑल्सो इट इज कवरिंग द डेसिमल पार्ट ऑफ द numbers. Okay, frequency will remain the same, only the class intervals will change. I hope the solution is clear. So next question we have, you need to convert this following series, which is the mid value series, okay, into a simple frequency. A very interesting question, let's see. So the mid value series was this thing. Mid value दी हुई है, frequency दी हुई है टेबल में. You need to convert it into a simple series. Okay, so class interval आ जाएगा. क्लास इंटरवल तो चाहिए ना, मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं. अब कंफ्यूज नहीं होना है, वी हैव डन दिस बिफोर ऑल्सो. लेट मी गिव यू द फॉर्मूला एंड अ क्विक रिविजन हाउ आई गॉट दिस क्लास इंटरवल हियर, so that you can find out similarly the rest of the remaining class intervals. Okay, I'll give you the solution of the very first row so that the remaining rows you guys can practice and find out the solution. Okay, so talking about the formula, मिड वैल्यू के अंदर भी सेम रहता है. पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मिड वैल्यूज की जो हम दी हुई है हमें वैल्यूज, उनका कॉमन डिफरेंस देखते हैं. ओके, अगर कॉमन डिफरेंस देखें, मिड वैल्यू कैसी दी हुई है, 5, 15, 25, 35, 45, 55. इन मिड वैल्यूज का कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 10 का. 15 से 25 में 10 का. 25 से 35 अगेन 10. 35 to 45 is again 10, and lastly 45 to 55 is again the difference of 10. तो पहला स्टेप बोलता है कि आपको कॉमन डिफरेंस मिड वैल्यू में फाइंड आउट करना है. हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, 10. नाउ जो लोअर लिमिट होती है उसके अंदर फॉर्मूला क्या रहता है, m माइनस हाफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंस. ओके, तो फॉर्मूला इज लोअर वैल्यू में हम मिड वैल्यू माइनस हाफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंस को माइनस करेंगे और अपर लिमिट में सिमिलरली हम उसको ऐड ऑन करेंगे, राइट. तो लोअर वैल्यू में अगर m क्या दिया हुआ है, हमें फर्स्ट मिड वैल्यू क्या थी, 5. ओके, तो लोअर वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 माइनस हाफ ऑफ i. हाफ ऑफ i क्या है, 10. हाफ क्या हो जाएगा, 5, राइट. सो 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. सिमिलरली आप अपर लिमिट में ऐड करोगे m प्लस हाफ ऑफ i. हाफ ऑफ i क्या है हमारा, 5. 5 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, m प्लस 5 क्या होगा, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10. तो आपको फर्स्ट क्लास इंटरवल मिल गया है कि क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 10. लोअर वैल्यू 0 है और नेक्स्ट वैल्यू 10 है. ओके, एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ सो दैट द आइडिया इज मोर क्लियर टू यू ऑल. ओके, सिमिलरली आप सेकेंड क्लास इंटरवल निकालोगे. ये सब स्टेप तो सेम रहेगा हमारा. हाफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट स्टेप तो सबका सेम रहेगा, सिर्फ m की वैल्यू चेंज करते चलना आप, ठीक है. नेक्स्ट मिड वैल्यू आपको दी है 15, तो m माइनस हाफ द वैल्यू ऑफ i. हाफ द वैल्यू ऑफ i भी सेम रहेगी हमारी, चेंज तो होगी नहीं, विच वॉज 5. तो बस मिड वैल्यू की वैल्यू चेंज हुई आपकी, आपने 15 प्लेस की नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लिए. 15 माइनस 5 10, एंड अपर लिमिट में आप ऐड करोगे तो 15 प्लस 5 20. Similarly, you will get a next class interval equal to 10 to 20 वाली category. Okay. So this is how we got this table. Okay. Mid value दी हुई थी, frequency दी हुई थी. सिंपल सीरीज में करने के लिए मिड वैल्यूज को हमें क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ता है. सो सिमिलरली वी हैव चेंज द मिड वैल्यू इनटू द क्लास इंटरवल, राइट. और हमें ऐसे करके following the technique, the formula which I have shared right now, you can find out the similar class intervals. Okay, so try and doing it, try different questions regarding the type or the category and practice more of the questions. As always remember, practice makes a man perfect. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And if you really like this video and enjoy watching the fun facts, then do not hesitate to press in the thumbs up icon. And also do not forget to like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you so much.